guys, welcome to the channel ICSC Concepts. This is me Ekta Keswani, and today I'm going to take the very first topic of chemistry, that is the periodic table. So before periodic table came into existence, periodic table बनाया कैसे किन चीजों से बनाया? So periodic table is made up of elements. Elements comprises the periodic table. So what are elements? Elements are the pure substances that are made up of only one type of atom. If I am saying that sodium is an element, this means it is made up of only sodium atoms and not potassium or chlorine atoms. Right? Similarly, it goes for all other elements. So elements are the basic and important unit for any kind of matter. Now, if I talk that periodic table जब आया तो एक ही बार में नहीं आ गया था. There were certain scientists who proposed their postulates and theories before this came into existence. So सबसे पहले आए Dobie Rinner. He told that arrange the elements, like if I say arrange the elements in the form of triads, that is chlorine, bromine, iodine को आप ऐसे arrange करें that the atomic weight of the middle element is the arithmetic mean of the other two, right? तो उनकी ऐसी theory थी. But there are so many elements in nature. There are 118 elements. आपने 3 या 6 या 9 की हमें नहीं जाननी थी, तो इसलिए उनकी थ्योरी कैंसिल कर दी गई. अब आई न्यूलैंड ने बताया अरेंज द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिकल नोट्स एज वी स्टडी सा रे मी सा. So sa and sa, this is the first note and this is the 8th note. So उन्होंने बताया कि arrange the elements in the form of musical note such that every 8 element beginning from any element resembles the properties of the first element. मतलब ये दोनों एक दूसरे की property resemble कर रहे हैं. Musical note में तो हो रहा था, certain elements में भी हो रहा था, but again उन सारे elements के लिए उन्होंने नहीं बताया. So his theories were also cancelled. Then came Mendeleev. Mendeleev told that the physical and chemical properties are periodic function of their atomic masses. Now he told that arrange the elements in the form in the sequence of atomic masses ताकि जो highlight हो regular trend में वो atomic masses के basis पे हो. But वो हर जगह नहीं हो रहा था. He could not explain the existence of rare earth metals, that is the lanthanides and austenites, which are radioactive elements, as well as the position of isotopes. Isotopes are those elements which have same atomic number but different mass number. उनकी existence इन्होंने नहीं बताई. So that was the uncertainty in his theory. Then came Henry Moseley. He told that the physical and chemical properties are periodic function of the atomic numbers. Please note it down. The physical and chemical properties are periodic functions of the atomic numbers. उन्होंने बोला if you arrange the elements in the form of atomic number, you will get that highlight the regular trend in physical and chemical properties. This is the periodic table. Please do take a screenshot. Since you saw that periodic table, now I am going to tell you what is a periodic table. A periodic table is a tabular arrangement of vertical columns, that is groups, and horizontal rows, that is periods, which highlight the regular trend in properties. हर कुछ interval के बाद properties जब reoccur करती हैं, that is highlighting the regular trend in properties. So thereby periodic table is that tabular arrangement which highlights the regular trend in properties. Now we are going to discuss about certain groups and periods which are present in the periodic table. So सबसे पहले the vertical columns are called the groups. So सबसे पहले है हमारे पास group 1. They are called alkali metals. Please note it down. So alkali metals, they are the ones which form water soluble bases. Then we have alkaline earth metals. So we are discussing about the groups. Now these form weaker alkali as compared to group 1. Then we come to group 3 to 12. They are called transition elements. Why are they called transition elements? Because
they have their two outermost orbit incomplete. Transition means existing in distinct state. So if I take up an element, for example scandium, having atomic number 21, electronic configuration होगी इसकी 2, 8, 8 and 3. So you will say कि यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिट इनकम्प्लीट है. Why am I saying कि दो ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहते हैं? Because इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2, 8, 9 and 2. So thereby we conclude that these two orbits are incomplete. So इसलिए यहाँ पे 3 to 12 इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. Then we have group 13 which is called boron family. Then 14 carbon family. Then we have 15 nitrogen family and 16 that is the oxygen family. So why are they called boron, carbon, nitrogen, oxygen family respectively? Because they have the very first element as these only. Now oxygen family is also called chalcogens because they are their derivatives or they form O's. So they are called chalcogens also. Then we have 13 is halogens. These are called halogens. They are colored non-metals and they are very reactive in nature and therefore always found in combined state. Then 18 or zero group, they are called inert gases or noble gases. Why are they called noble or inert gases? Because ये इनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट हमेशा कंप्लीट रहता है, तो ये बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं, तो ये एकदम अलग रहते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्ट. एंड देन वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये मेन एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के. दीज आर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स of periodic table. That is why they are also called representative elements. Clear? For the 6th and the 7th period, you will find a certain range of numbers specified. Those are the lanthanides and astenite series. और उन्हें हमेशा नीचे लिखा जाता है. Why? अगर उन्हें mention कर दिया गया periodic table में, they will distort the entire shape, and that is the reason they are written down. Now we talk about certain elements as sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur. ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने ग्रुप्स को टिपिकली समराइज करते हैं. दे टिपिकली समराइजेस द प्रॉपर्टीज. जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो आपको पक्का से दिखेंगी उन एलिमेंट्स में. दैट इज द रीजन दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर पीरियड्स. नाउ पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज, राइट. हॉरिजॉन्टल रोज 1 से 7 तक है, इनको पीरियड्स कहते हैं. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई एलिमेंट एग्जाम में दे दिया गया, सपोज आई गिव यू कैल्शियम विथ एटॉमिक नंबर 20 एंड आई एम आस्किंग यू टेल मी टू विच ग्रुप और पीरियड इट बिलोंग्स. अगर आपको नोन एलिमेंट है, यू विल बी एबल टू डू इट. बट देन इफ एन अननोन एलिमेंट कम्स अलोंग विद इट्स एटॉमिक नंबर स्पेसिफाइड, how will you determine to which group and period it belongs? So there is a method for it. Now calcium, we'll do the electronic configuration 2, 8, 8 and 2. So how many number of shells are there? This is K shell, this is L, this is M and N. How many shells are there? There are 4 shells. So shells determine कि किस period में वो belong करता है and what are the number of electrons present in the outermost orbit? 2 electrons. So electrons in the outermost orbit, what does that determine? कि वो किस group में belong करता है. So this determines what? Calcium belongs to group 2. So this belongs to group 2 and period 4. Why? Because there are number of shells which are 4 and 2 electrons in the outermost orbit which determines the group. So this is all for determining groups and periods. So now we talk about periodicity. Now what is periodicity? The properties that reappear after a regular intervals of time. Yeah, if there is a gradual variation in properties after a regular interval of time, that is called periodicity.
The phenomena is periodicity and the properties are called periodic properties. So please note down the definition of periodicity. The properties that reappear after a regular interval of time or in which there is a gradual variation, the properties are called periodic properties and the phenomena is called periodicity. तो why this periodicity आकर क्यों regular trend हो रहा है, क्यों वहाँ पे properties repeat हो रही हैं या थोड़ा सा variation हो रहा है? The cause of periodicity is the number of electrons which are present in the outermost orbit. The electronic configuration में, if I take elements lithium, sodium, potassium, 2 1 2 8 1 2 8 8 1, what is it? As I am going down the group, number of electrons in the outermost orbit, they are the same. What does that signify? इसी की वजह से periodicity हो रही है, इसी की वजह से there is regular trend in the properties. That is the reason the cause of periodicity is what? The number of electrons present in the outermost orbit. इसीलिए groups में periodicity का phenomena बहुत ही अच्छे तरीके से follow होता है. Now the next thing I am going to tell you about the orbits. ये इससे थोड़ा सा हट के टॉपिक है. अगर मैंने लिथियम बोला है, मैंने इसका बनाया तो यहाँ पे मैंने 2 बना दिए, यहाँ पे 1 बना दिया. तो मैंने यहाँ इस पे क्यों बनाया? मैं कहीं पे भी लगा सकती थी इलेक्ट्रॉन, नहीं. जैसे कि अगर सन है यहाँ पे एंड अर्थ इज रोटेटिंग लाइकवाइज इन दिस डायरेक्शन, तो या सन के चारों ओर अर्थ ऐसे ऐसे तो रोटेट करेगा नहीं, अपने zigzag मोशन या कोई भी मोशन में नहीं रोटेट करेगा. इट फॉलोज अ डेफिनेट पाथ इन ऑर्डर टू रोटेट. वैसे ही these electrons also rotate around a definite path around this nucleus in this definite path which is called orbit or a shell. Okay. Regarding this shell part, कि अगर हम ग्रुप के नीचे जा रहे हैं या फिर पीरियड के अक्रॉस जा रहे हैं तो क्या होगा नंबर ऑफ शेल्स का. सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, these are all elements which are present in what? In group. So इनका क्या होता है, एक एक, यहाँ पे 2 शेल्स है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5. So we can conclude the number of shells as we move down the period, number of shells increases. When we move across a period, what happens to the number of shells? If I am talking about sodium, magnesium, aluminium, ये 3 हैं, they are from 3rd period. So sodium 281, 282, 283, similarly it goes on. तो क्या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं? नहीं. एक यही पीरियड की यही तो खासियत है कि कितने शेल हैं वो डिटरमाइन करता है पीरियड. तो इसलिए अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट Na being positive charge, Cl being negative charge, combine together and form NaCl. तो कैसे? It is all because of valency जो इनके पास है. This is having valency as 1, this is also having 1. तो इसलिए इन दोनों ने combine किया. So thereby valency is defined as the combining capacity of any element. It is the number of electrons an atom can donate or accept in order to form a compound or a salt. Now the first question that comes into the mind, down the group क्या वैलेंसी चेंज होती है? नहीं. मैंने जैसे बताया था लिथियम इज दिस, सोडियम इज दिस, पोटेशियम इज दिस. सो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, सो देयर बाय इनकी वैलेंसी क्या रहती है? हमेशा 1. तो अगर मैं अक्रॉस द पीरियड बात करूं, टेकिंग सेकेंड पीरियड इनटू कंसिडरेशन, मैंने बात की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ ग्रुप की. ठीक है. तो 1 2 3 4 तक जाने तक आपका क्या रहता है? यहाँ पे फिक्स रहता है. बट जैसे ही आप 5th ग्रुप में जाते हो वहां पे वेरिएशन स्टार्ट होता है. तो 5th ग्रुप में यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हियर इट इज फ्लोरीन, हियर देयर इज कार्बन. वी डोंट नीड टू कंसीडर दिस क्योंकि आपको पता है इनकी वैलेंसी 1 2 3 रहेगी पूरे साइड. सो 4th में
यहाँ पे भी कार्बन में इसकी वैलेंसी 4 रहेगी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, जब हम फिफ्थ एलिमेंट पे आते हैं, यहाँ फिफ्थ ग्रुप के पीरियड अक्रॉस में, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो जाती है 8 - 5 दैट इज 3. इसकी हो जाती है 8 - 5 2, it is equal to 2, and this becomes 8 - 7 that is equal to 1. So इनकी वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं? By subtracting this number, the group number from 8, right? तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 एंड ऑक्सीजन की हो जाएगी 2 और फ्लोरीन की हो जाएगी 1. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी नोटेड कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. आप ये नहीं बोल सकते क्लोरीन या फ्लोरीन की वैलेंसी -1 है. दिस इज द चार्ज which it carries. This is not the valency. So valency is always positive, which is called the combining capacity. These are some important questions. Please do take a screenshot and do it. So that's it for the day. Hope you have learned something new. If you have any queries or doubts regarding anything, you can definitely email us, or you can drop the comment down in the comment section. Stay tuned and thank you.